Hello, everybody. I'm continuing to keep the spotlight on the horrific and brutal murder of the independent journalist Mukesh Chandrakar on the 1st of January. He used to run a YouTube channel called Bastar Junction. And not only has this murder put the spotlight on journalism and journalists, but it has also put the focus on Chhattisgarh and the conflict-ridden areas of Chhattisgarh, where the common man is caught between a brutal battle between outlawed Maoist groups and Naxal groups on the one hand and Indian security forces on the other. To get a sense of the kind of context and the landscape in which journalism functions in a region like Bastar, the kind of work that Mukesh did, how his colleagues in the region saw him, I'm delighted to be talking to Pushpa Rokade. She is on the ground, reports from Bastar, and writes and for the daily newspaper Prakhar Samachar. Pushpa, thank you very much for joining me. And I think the first thing I want to say is condolences, offer you condolences to you and all journalists in Bastar, in Chhattisgarh who knew Mukesh and who are colleagues of Mukesh. मुकेश हमारा बहुत अच्छा कलीग था और हमारे साथ वो एक अच्छा पत्रकार था। हमने बहुत अच्छा हमारा पत्रकार खो दिया है आज। उसके लिए हमें बहुत दुख है। बीजापुर में तकरीबन 50 से 60 पत्रकार हैं जो रोजाना इस तरह के काम करते हैं। फिर भी 10 से 12 ऐसे पत्रकार हैं जो चुनिंदा जगहों पे काम करते हैं, क्योंकि बीजापुर एक माविष्ट एरिया है और यहाँ लगातार पुलिस नक्सली मुठभेड़, फर्जी मुठभेड़ और अन्य तरह के प्रॉब्लम्स आते ही रहते हैं रोजाना, जिसको लेके मुकेश काम करता था और अच्छा काम करता था। कभी-कभी वो नक्सलियों का भी इंटरव्यू कर लेता था, कभी पुलिस का इंटरव्यू करता था, कभी फोर्स का इंटरव्यू करता था। इस तरह वो अलग-अलग इंटरव्यू करता था और अपने बस्तर जंक्शन के जो यूट्यूब चैनल था उसका, उसपे वो दिखाता था। साथ ही वो एक टीवी चैनल में भी काम कर रहा था कुछ दिनों से। तो अभी लगातार ये सारी चीज़ों के साथ-साथ उसने एक सड़क का कवरेज किया था और उनके साथ उनके और भी लोग थे जिन्होंने इस सड़क के कवरेज को लेकर काम किया था और खबर चली थी। तो 25 या 26 दिसंबर को ये खबर चली थी, रायपुर डेडलाइन से चली थी, क्योंकि जिस सुरेश चंद्राकर की बात हम कर रहे हैं, जो मुकेश की हत्या में शामिल होने की बात कर रहे हैं, वो एक्चुअल में उनका एक रिश्तेदार भी है और रिश्ते में वो भाई भी लगता है। और इस तरह की घटना दिल को झंझोड़ देता है कि मतलब एक रिश्ते को तार-तार करने के साथ एक कवरेज बाहर आना, मतलब सरकार और प्रशासन का जो भ्रष्टाचार का जो चीज़ बाहर आता है, उसको लेकर एक पत्रकार कितना ज़मीनी स्तर पे मेहनत करता है और उसे बताने की कोशिश करता है कि आपके सिस्टम ने किस तरह भ्रष्टाचार किया है, कहाँ-कहाँ चूक की है। उसे प्रशासन और सरकार को समझना चाहिए कि अगर एक पत्रकार हमें बता रहा है, तो दोबारा उस सड़क को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उसपे हमें काम करना चाहिए, ना कि उसे मौत की सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये हम लोगों के लिए बहुत बहुत ही दुखद चीज़ है कि सरकार और प्रशासन ने इस पर ध्यान ना दे करके अभी तक हमने देखा कि सरकारी कार्रवाई कुछ भी पीडब्ल्यूडी के किसी अधिकारी के ऊपर या फिर और किसी के ऊपर इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई। सिर्फ़ हमारा मुकेश ही खोया हमने, क्योंकि वो इसका एक हिस्सा था, उसने एक कवरेज किया था कि ये बहुत ही एक दुखद पुष्पा, चीज़ है। जी। बिल्कुल दुखद चीज है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये रोड जो सुरेश चंद्राकर नाम के कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदार ने बनाया था या नहीं बनाया था पैसे लेके, और वो सड़क बनी नहीं जिस तरीके से बनना सड़क बनना चाहिए। ये जो कवरेज किया था मुकेश चंद्राकर ने, क्या अन्य जर्नलिस्ट और पत्रकार भी इस विषय के ऊपर कुछ कवरेज किया था वहां पे? हाँ, स्टार्टिंग में ये नेलसनार से गंगालूर को जोड़ने वाली सड़क है, हम्म। जो पिछले 30 साल पुराना सड़क था, हम्म। जिसे अचानक सरकार ने पता नहीं गंगालूर एरिया के जो माइनिंग एरिया है,
तो बैलाडीला हमारा माइनिंग एरिया है। बैलाडीला गंगालूर से जुड़ा हुआ एरिया है। और वहाँ 13 नंबर खदान और 5 नंबर खदान के कुछ हिस्से आते हैं, जिसके माल को निकालने के लिए शायद ये सड़क का निर्माण हो रहा था। और ये 2015 से इसका निर्माण चालू था। और वो धीरे 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 काम चल रहा था। कभी कोई ठेकेदार करता था 3 किलोमीटर, कोई 2 किलोमीटर, कभी 5 किलोमीटर, ऐसा टेंडर होता था। और कई ठेकेदारों ने इसका काम लिया। फिर अचानक से सुरेश चंद्राकर आते हैं और वो सारी सड़कों को बनाने की बात करते हैं। और वो काम भी कर रहे थे, सक्सेस भी थे। उस सड़क पे तकरीबन 50 किलोमीटर सड़क है, जो नेशनल हाईवे को अंदर ही अंदर से जोड़ता है दोनों तरफ से। तो उस सड़क में तकरीबन 6 से 7 सीआरपीएफ सीएफ के कैंप भी लगे हैं सुरक्षा के लिए। और वो सड़क बन रही थी। तो देखा जाए तो वो एक तरह से पूरे पूरी तरह सुरक्षा में बन रही थी बस। और वो सुरक्षित नहीं था सड़क। कहीं ना कहीं वो कहीं भ्रष्टाचार के चढ़ रहा था। हम्म। फॉरेस्ट लैंड की अगर हम बात करें तो काफी पेड़ पौधे काटे गए, तोड़े गए। मैं खुद जाकर देखी हूँ। कई ग्रामीणों के जमीन गए हैं, कई के खेत चले गए हैं। कई जगह ऐसे कैंप लगे हैं जहां उन ग्रामीणों के 3-3 4-4 एकड़ खेत चले गए हैं, जिसको ठेकेदार ने बोला था कि हम इसका मुआवजा देंगे, पर आज तक उन्हें मिला नहीं। तो इस तरह का छोटा छोटा चीज बहुत सारा निकल कर अब आ रहा है। उस सड़क पे इतनी मुरूम मट्टी डाली गई थी, जो पानी में बहकर नीचे की ओर आया और खेत में बह गया। जिसकी वजह से इस बार किसानों का अच्छा फसल भी नहीं हो पाया, क्योंकि उस एरिया में ज्यादा आदिवासी नहीं है, छोटे छोटे गांव हैं। और 100-150 लोग होंगे, 200। और कहीं 20 घर, कहीं 30-50, ऐसे छोटे छोटे घर हैं। क्योंकि वो काफी अंदर और काफी गहरा जंगल के बीच है वो। और उस जगह से सड़क बनाना मतलब काफी जद्दोजहद है। और हम्म। 2015 से 2024 पहुंच गए, और अब तक उसका काम चल रहा था। तो सरकार को, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उन्हें भी ध्यान देना था। साथ ही विभाग के जो अधिकारी थे पीडब्ल्यूडी के, उन्हें भी ध्यान देना था कि आखिरकार हम पैसे तो निकाल रहे हैं, काम कैसा हो रहा है, किस तरह हो रहा है। क्योंकि पीडीएस का चावल जाएगा ट्रक में, तो एक कैपेसिटी होनी चाहिए सड़क की। अगर वहाँ कैंप लगा है, हम्म। कैंप लगने के लिए भी सामान जाएगा ट्रकों में, तो उसकी भी कैपेसिटी होनी चाहिए। वो तो उनको नजर आना चाहिए था, पर पता नहीं है क्यों नजर नहीं आ रहा था। और अचानक मतलब पत्रकारों को नजर आ गया। और पत्रकार अगर उस पे काम कर रहे हैं, तो सरकार और वो ठेकेदार अपने आप में इतना बड़ा वो था कि उसे लगने लगा कि बस अब तो मेरा काम बंद हो जाएगा। तो ना जाने वो कहाँ से कहाँ अपना दिमाग लगा के किस तरह एक खूनी तक बन जाता है। ये बहुत वो है। और इस सब के पीछे सरकार भी शामिल है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस ठेकेदार को उसने पूरी तरह छूट दे रखी थी। और हम्म। कितना पैसा दे दिया उसके। आई वॉन्ट टू आस्क यू, जिस दिन ये मुकेश घर से सॉर्ट ऑफ डिसअपियर हो गए, वो लापता बने 1 जनवरी को, और फिर 3 को उनके उनके डेड बॉडी वो सेप्टिक टैंक में मिला। ये ये पुलिस ने निकाला है, लेकिन जर्नलिस्ट जो आपके जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी है वहां पे, आपका भी हाथ रहा है। ये मुकेश को क्या हुआ, मुकेश कहाँ गया, और मुकेश शायद वो सेप्टिक टैंक में उनका हत्या होकर वो है उसमें। ये एक चेन ऑफ इवेंट्स में जर्नलिस्ट का भी रोल है। उसके बारे में आप थोड़ा हमें बताएंगे, क्योंकि आप भी थी वहां पे शायद। जी। हमने 2 तारीख के शाम को ही हमारे लड़के थे और भी साथी हैं, वो हम्म। गूगल ट्रैक कर रहे थे। गूगल ट्रैक से मुकेश का लगातार उसी बाड़े पे लोकेशन आ रहा था। तो लोकेशन पे रात में तकरीबन 9:30 बजे गए। दस हम्म। 10:30 बजे तक उस ठेकेदार को बुलाए। और हम्म। उस वो आया भी 5 चाबी लेकर अपने बाड़ा का। क्योंकि वहाँ 17 रूम है, जिसमें से हम्म। 5 चाबी वो लेकर आया। उसे खोला गया, कुछ तालों को तोड़ा गया। नहीं बोला उस बस ऐसे ही नॉर्मल सा, या बस ये निर्माण हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी चीजें वो बोला। और फिर वो चला गया। पुलिस भी वापस लौट के आ गई, पत्रकार भी अपने घर चले गए। फिर रात भर लोगों ने सोचा नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। फिर अगले दिन फिर से वही गूगल ट्रैक, फिर वही का लोकेशन।
फिर मतलब सोचा पत्रकारों ने कि चलो आसपास का एरिया देखते हैं। तो वो जो जिस एरिया में वो बाड़ा है वो थोड़ा सा जंगल टाइप का है, और थोड़ा घाटी और थोड़ा सा नदी टाइप का। तो उन एरियाओं पे भी पत्रकार खुद जाकर छानबीन किए और आसपास वो लोगों से पूछे, बातचीत किए। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर से सब थक के उसी जगह जाकर बैठ गए। बोलते हैं ना, एक मतलब एक कुछ चीज था जो बार बार लोगों को वहां लेकर जा रहा था, और पूरे पत्रकार साथी फिर से जाके वहां बैठते हैं। फिर उन्हें लगता है नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। तो अचानक से वहां दो लड़कियां दिखती हैं, उनसे बातचीत होती है। फिर जो लड़के वहां पे बैडमिंटन खेलने जाते थे, उनसे बातचीत होती है। तो अलग अलग लोगों से बातचीत होने के बाद थोड़ा सा स्पष्ट होता है कि नहीं, ये टंकी आखिरकार उसने बनाया क्यों? जब इतने दिन से खाली पड़ा था तो उसे बनाने का सूझा नहीं, अभी अभी क्यों सूझा? तो ये जो शक की सुई होती है ना, वो मतलब पत्रकारों के मन में होती है। और वो पत्रकार उसी शक की सुई का यूज किए और उच्च अधिकारियों को बताए, और मतलब अड़ गए कि नहीं, इसे आज तोड़ना ही है। मैंने फिल्मों में, टीवी सीरियलों में जो देखा था, यूपी, बिहार और बड़े बड़े शहरों में जिस तरह के हालात बनते हैं, और कोई ठेकेदार के द्वारा भ्रष्टाचार की खबर निकालने या लगाने, या फिर उसके फोटोग्राफ्स के लिए अगर कोई पहुंचता है पत्रकार, तो उसकी हत्या करके वो दीवारों में चुनवा देता है। तो वो ये मैं पहली बार अपनी लाइफ में बीजापुर में देखी, जो दिल दहलाने वाला था। हम तो सोचे ही नहीं थे कभी कि वो सेप्टिक टैंक से बाहर आएगा, क्योंकि कोई भी उम्मीद नहीं करता है अपने घर वालों का कि इस तरह का माहौल बने, हालात बने। और एक पत्रकार ही ऐसा चौथा स्तंभ है दुनिया का, जो एक छोटे से छोटे चीजों को बाहर लाता है, प्रशासन को बताता है कि आपकी गलती है, पुलिस को बताता है आपने यहाँ गलती किया है। मतलब तरह तरह के जो भी हालात बनते हैं दुनिया में, उन सारी चीजों को अगर एक पत्रकार बताता है और उसकी सजा इस तरह अगर मिलेगी, तो मुझे लगता है आने वाले समय में जो हम्म। युवा पत्रकार जुड़ रहे हैं और जुड़ना चाहते हैं, इस तरह के हालातों को देखकर पत्रकारिता से दूर भागेंगे। तो इस माहौल में एक पत्रकार के ऊपर क्या चैलेंजेस है, आप अपने अनुभव से बताएं। हम जिस एरिया में रहते हैं और काम करते हैं, वहाँ सबसे पहले तो सड़क नहीं है। नदी, नाला, जंगल, इस तरह के एरिया हैं। और यहाँ 75% एरिया पूरे जंगल वाले हैं, जहाँ जाकर काम करना पड़ता है। तो अगर सरकार चाह रही है कि उन जंगली एरियाओं में जो ग्रामीण आदिवासी बैठे हैं, रह रहे हैं, उनको विकास की ओर लाना, तो सबसे पहले सड़क एक माध्यम है उनको जोड़ने के लिए, ऐसा सरकार को लगता है। और वो सड़कें बना रही हैं। और क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जो इंडस्ट्रियल एरिया से भी लगा हुआ है। हम बीजापुर से कुछ ही दूरी पे बैलाडीला आता है जंगली क्षेत्र से, और उसका जो कुछ हिस्सा है वो बीजापुर को टच करता है। तो उसी माल को निकालने के लिए ये सड़क बनाई जा रही थी। और वो किस तरह का काम कर रहे थे, ये तो अपने आप में सोचने वाली, रिसर्च करने वाली बात है कि 2015 से एक सड़क बन रही है, बन रही है, बन रही है, और 2025 आ चुका है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं हाँ, कि बिल्कुल। उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, किस तरह वो बनना चाहिए, और किस तरह इसमें कितने लोग इन्वॉल्व होंगे। ये कितने पैसे लूटे हैं लोगों ने। हाँ, लूटे हैं, कितने पैसे निकाले हैं, कितने पैसे निकालना चाह रहे थे। और उस पे मतलब ये सोच रहे थे कि और कुछ कर लें, और कुछ कर लें, और पैसे निकल जाए। इस तरह का कुछ जो माहौल बन रहा था, ये बड़ा ही दर्दनाक है। इन सब के साथ में मैम एक चीज और बताना चाहूंगी। अक्सर सुरक्षा की बात करते हैं लोग, और नक्सल गाड़ियां जला देते हैं, और भी चीजों को नुकसान कर देते हैं, ठेकेदारों की आईडी क्लास हत्या। आते, आईडी हाँ, क्लास होते रहते हैं। हाँ, ठेकेदारों की हत्या कर देते हैं कंस्ट्रक्शन काम में। उसको लेकर सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं। और सुरक्षा कैंप जो बनाए जाते हैं, वो अक्सर पत्रकार हो चाहे कोई और व्यक्ति, ग्रामीण, उनको उन एरियाओं में जाने से रोका जाता है। उन्हें मतलब कहा जाता है आप इधर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्यों नहीं देख सकते? आखिर हमारे लिए यहाँ सड़क बन रही है, हमारे लिए स्कूल बन रहा है, आंगनबाड़ी बन रहा है, हम उसे क्यों नहीं देख सकते हैं? क्या हम्म। हमें जानने का हक नहीं है कि हम्म। आपने कितना अच्छा काम किया है? क्या हमें बिल्कुल, मतलब जितने यहाँ सीआरपीएफ के कैंप हैं, कितने सीएफ के कैंप है, बिल्कुल वो, बिल्कुल आपका कहाँ जा रहे हो, क्या नाम है, क्या पूरी आइडेंटिटी आप बता दो, अपना प्रेस कार्ड दिखा दो, फिर भी वो, उन्हें विश्वास ही नहीं होगा कि आप हम्म। कौन है।
अरे भाई, आप भी बड़े बड़े सीटीओ से आए हो, यहाँ ड्यूटी कर रहे हो, आप कम से कम इतना तो समझो कि कोई पत्रकार ही इस तरह लड़ सकता है कवरेज के लिए, कोई ग्रामीण नहीं लड़ेगा। ये हम्म। भी आपको समझना पड़ेगा। अगर वो अपना आइडेंटिटी दिखा रहा है तो फर्जी आईडी लेके उसको बिल्कुल भी शौक नहीं है जंगल में जाके गोली खाने का, आईडी में आने का और आत्महत्या करने का, तो बिल्कुल शौक नहीं है उसको। पर वो एक मतलब वो चौथा स्तंभ है और उसे लगता है, और वो पढ़ा लिखा है और उस जगह पे बैठा है, तो उसको अंदर से अनुभव है कि मुझे एक ऐसी रिपोर्टिंग निकालनी चाहिए जिससे पता चले कि किस तरह का करप्शन हो रहा है। तो कभी-कभी इन सी चीज़ों से भी ये सारा इस तरह के करप्शन बाहर नहीं आ पाते हैं। ये भी हमारे लिए बहुत वो है, चैलेंजिंग चीज़ है एक। दूसरा कई से जगह है जहाँ हमको पैदल जाना पड़ता है। रात, हम्म। दिन पैदल जाके आप पहुँचोगे और अगर उस जगह की आपको अच्छे से जानकारी ना हो, तो आपके लिए खतरनाक है वो, क्योंकि कहाँ आईडी लगा हुआ होगा, वो आप बिल्कुल उसको नहीं समझ सकते। अगर कोई ग्रामीण आपकी मदद कर रहे हैं उस जगह में जाने के लिए, तब भी आप कभी-कभी स्पाइक होल एक ऐसा गड्ढा होता है जहाँ पतले-पतले छर्रों को रख दिया जाता है और उसके ऊपर चटाई रख के पत्ते ढक दिए जाते हैं और बिल्कुल आपका पैर आ गया तो फिर बहुत मुश्किल है आपके लिए वो ज़िंदगी। तो कभी-कभी पैर खराब हो जाते हैं, कभी अगर शरीर का कोई दूसरा अंग भी उधर आ गया, तो वो जंक लगा वाला चीज़ है। तो मतलब सोच नहीं सकते कि एक रिपोर्टर को कितने सारे चीज़ों से गुज़र कर एक खबर निकालनी पड़ती है। मैं मुकेश की वीडियोस देख रही थी, तो उसमें वो नक्सल वालों के कुछ कैंप, कुछ सभा का कवरेज दे रहे थे। स्कूल में पानी भर गया है, स्कूल के कंपाउंड में स्कूल पहुंचना मुश्किल है, सड़क नहीं है, तो इस टाइप के रिपोर्ट्स भी करते थे। होम मिनिस्टर गए हैं गुंडम गांव, उसमें क्या हुआ, वहां पे वो क्या बोले, उसका भी रिपोर्ट करते हैं। तो जर्नलिस्ट को कहाँ से हर 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 तरीके से खतरा है, या मतलब सब सब भी आपको सस्पिशियस नजर से देखते हैं? पहले तो क्या एक ये चीज़ है एक मैम। अलग चैलेंज है कि ये एक एक अलग? एक अलग तरह का चैलेंज तो है मैम, लेकिन बस्तर जैसे जगहों पे लोग पत्रकार जो है बीट पे काम नहीं करते हैं। बीट हम्म। पे मतलब वो किसी एक पर्टिकुलर विषय को लेकर समझ। काम नहीं करते हैं। यहाँ कुछ पत्रकार हैं जो ग्रामीण क्षेत्र को लेकर काम करते हैं, विकास को लेकर काम करते हैं और अगर आपका विकास वहाँ नहीं पहुँचा है, तो उसको भी लेके काम करते हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर हम्म। आप प्रशासन का, सरकार का वाह-वाही और अच्छा चीज़ दिखाओगे, तो आप अच्छे पत्रकार हो, वरना वो आपको तिरछी नज़र से देखना स्टार्ट कर देंगे और फिर आप को कई कार्यक्रम में नहीं बुलाएँगे। कई ऐसे एक्सेस जगह है बंद कर जहाँ दे, हाँ। हाँ, टाँट मारेंगे और बिल्कुल एकदम आपको देखेंगे तो फिर अलग तरीके का मुँह बनाएँगे। मतलब अधिकारियों का भी अपना-अपना एक वो है, जो ये करते हैं वो और हम महसूस किए हैं इस चीज़ को। और अगर आप बैलेंस बनाने के लिए दोनों पक्षों को दिखाते हो, जैसे आप गृह मंत्री जी पहुँचते हैं और गुंडम पहुँचते हैं, तो वो यहाँ के पत्रकारों को जिला प्रशासन ने ना बुलाया, ना बताया, ना पीआरओ ने बोला कि आप आओ। लेकिन यहाँ के पत्रकारों को लगता है कि गृह मंत्री अगर किसी ग्रामीण क्षेत्र में पहुँच रहे हैं और ग्रामीणों से चर्चा करने वाले हैं, तो आखिरकार वो क्या कहने वाले हैं? इसको लेकर हम्म। काफ़ी लड़ाई बिल्कुल। के साथ उस जगह पहुँचते हैं और उन्हें रोका भी जाता है कैंप में, बिल्कुल आप नहीं जा सकते आगे। किसके का परमिशन नहीं है। तो नहीं हम पत्रकार हैं, नहीं आप पत्रकार हो तो भी आपको नहीं जाने देंगे। तो हम्म। ऐसे भी भिड़ना पड़ता है। फिर हम्म। उसके बाद किसी पुलिस के बड़े अधिकारी को फ़ोन लगाओ, भई हमको आने दो भैया, हम यहाँ पहुँच गए हैं। तो वो कहते बहुत हैं अच्छा, अच्छा। रिक्वेस्ट अपील करके हाँ, बिल्कुल, प्रोसेस होती है। बिल्कुल मतलब आपको बिल्कुल हाथ-पैर जोड़ के तो पूरा एकदम और पुष्पा मेहनत करना पड़ेगा। पुष्पा, नक्सल और माओवादी ग्रुप्स का क्या नजरिया है पत्रकारों के तरफ? वो कैसे देखते हैं पत्रकारों को? वो भी इसी तरह हैं, जैसे अधिकारी, हाँ। कर्मचारी होते हैं, वो भी उसी तरह हैं। तो अगर आपने पत्रकार बीच उन में फंस गया है। हाँ, हाँ। पत्रकार बीच में फँसा हुआ है। अगर आप आज उनकी एक खबर दिखाते हो और बताते हो कि ये उन्होंने ये किया, वो किया, वो किया, तो वो बहुत अच्छा है। जैसे कि एक छोटा-सा कहानी था, कुछ 2 साल पहले पामेड़ एरिया में पानी आया था और नदी का पानी घरों में घुस गया था। तो उस समय में लोग नहीं पहुँच पाए, पुलिस नहीं पहुँच पाई, जिला प्रशासन का टीम नहीं पहुँच पाया। लेकिन
माओवादी वहां थे, इसलिए माओवादियों ने ग्रामीणों की मदद की, उनको छप्पर पे पहुंचाया, पेड़ों में चढ़ाया और किसी तरह अच्छे सुरक्षित जगहों पे निकाला। बहुत मेहनत किया उन लोगों ने। हमने ये खबर दिखाए तो अधिकारियों को लगा अरे आप उनकी तारीफ कर रहे हो, है ना। और अगर हम उनकी ये तारीफ नहीं करते तो उनको लगता है कि हमने अच्छा काम किया, मीडिया ने नहीं दिखाया। तो इसलिए मुकेश के लिए एक बार ऐसा कुछ हुआ भी था। मुकेश ने चुनाव को लेके खबर किया था। उसने कहा था कि अगर आप चुनाव में जाते हैं और चिन्ह लगाते हो उंगली में, तो माओवादी आपकी उंगली काट देते हैं। उसने ऐसा हम्म। कुछ खबर किया था। तो हम्म। उस पे उसे एक प्रेस नोट मिला था, जिसपे उसमें साफ तौर पे लिखा था, क्यों मुकेश हमें बताओगे क्या, हमने कितने लोगों की उंगली काटी है, अब आप बताओ हमें। इस तरह मतलब माओवादियों ने भी उसे हम्म। चिट्ठी लिख कर टांट मारा, है हम्म। ना। पुष्पा, अब मैं एक पर्सनल सवाल करूंगी। आपने ये एरिया, आप कहीं भी अपनी पत्रकारिता कर सकती थी, आपने बीजापुर क्यों चुना? मुझे क्राइम में पहले से इंटरेस्ट था मैम, और मैंने सलवा जुर्म की बहुत कहानियां पढ़ती थी। हाँ। अखबार में जब छपते थे 2005 में, उसको हम्म। देखती थी, सुनती थी। तो बड़ा दुख लगता था कि ये क्या चल रहा है, क्यों हम्म। ऐसा हो रहा है। ये सारी चीजों को मुझे समझना था, हम्म। जानना था कि आखिरकार दो भाई आपस में क्यों लड़ गए। हम्म। भाई तो थे, साथ बिल्कुल। में आधे पुलिस बिल्कुल। में चले गए, हाँ, हाँ। आधे लोग इधर रह गए, और दो भाइयों का बिछड़ा हुआ, और आज तक वो लड़ाई खत्म नहीं हुई। कभी भी रात को अगर माओवादियों के लिस्ट में जिसका भी नाम है, उसकी हत्या आज भी होती है, आज भी हत्या होती है। तो मतलब ये समझना था कि आखिरकार बीजापुर इतना छोटा जगह है और ऐसा क्यों होता है। तो मतलब मुझे लगता था उस चीज को जानना है, तो मैंने अपने सर को कहा कि नहीं, मुझे बीजापुर पे ही काम करना है, और वो मेरा एक हॉबी भी था। तो आज मैं बीजापुर पे हूँ और काम कर रही हूँ। मुझे लगता है मैं ज्यादा उतना तो नहीं कर पा रही, पर जितना मुझसे होता है उतना मैं कर लेती हूँ। क्योंकि महिलाओं में अभी तक बस्तर में मैंने ग्रामीण क्षेत्र, अंदरूनी क्षेत्र में जाकर काम करने वाले सिर्फ मालिनी सुब्रमण्यम जी को अभी कुछ दिनों से देखा है। हम्म। इसके अलावा मैंने अभी ऐसी कोई महिला पत्रकार को नहीं देखा जो आदिवासी क्षेत्र में जाए, लोगों की सुने, 2-2 3-3 दिन पैदल चलकर मेहनत करे, क्योंकि वो हमारे कुछ नहीं लगते। अगर हम ऐसा सोचेंगे, और तो हमारा पत्रकारिता का धर्म यहाँ पे खत्म हो जाता है। लेकिन अगर हम ये सोचें कि ये एक खबर है और सरकार को बतानी है कि किस तरह का प्रॉब्लम आज आया है और आगे जाके और भी प्रॉब्लम आ सकता है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, आज किस तरह की स्थिति में वो है, जहाँ उनका सरपंच, सचिव और और भी जो अमला है जिला प्रशासन का, सरकार का, वो नहीं पहुंच पा रहा है। तो उसको बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि 2 पार्ट है बस्तर के इस समय, एक पुलिस और एक सरकार। और इन सब चीज़ों में एक नक्सली भी है, जो नक्सली और पुलिस का जो सरकार के लिए काम करता है, वो बेचारा ग्रामीण दोनों तरफ से फँसता है, दोनों तरफ से उनकी मौतें हो रही हैं, दोनों तरफ से यहाँ इतनी ज़्यादा मौत हो रही है, जिसका कोई आकलन नहीं कर सकता। अगर सही तरीके से जिस दिन भी एक मतलब गिनती निकाला जाएगा कि आदिवासियों की क्या आज स्थिति है, कितने आदिवासी बस्तर में रियल हैं, तो मुझे लगता है कि आज 20% आदिवासी ही बचे हैं, क्योंकि हाँ। आधे जेल में, आधे हम्म। मुठभेड़ में, आधे हम्म। माओवादियों में बटे हुए हैं, और हम्म। इसके कारण बहुत दयनीय स्थिति है आज आदिवासियों की बस्तर में। I'm very thankful बोल to के you, Pushpa, for explaining this to us and describing your work life and Mukesh's work life with so much detail and nuance. और हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं, मुकेश ने जो काम करा है, इससे सभी पत्रकारों को, जिस जिस प्रकार का भी पत्रकार हो, कहीं भी बैठे हो दुनिया में, और इंडिया में तो डेफिनेटली, बहुत इंस्पायर करने वाली एक्सपीरियंसेस और काम है आपका। तो मैं सिर्फ आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहती हूँ, और हम
हम जुड़ते रहेंगे. We'll keep talking, थैंक यू। Pushpa. थैंक यू। That was Pushpa giving us a sense of what it means to be a reporter in Bastar and Bijapur and the realities of working there. I'm going to dig deeper, stay with the life and death of Mukesh Chandrakar and try and understand it in the context of the socio-political and economic realities of Chhattisgarh. To do that, I'm speaking next to Malini Subramaniam, an independent journalist who's based in Jagdalpur. She spent close to 2 decades working in the development field there and then in journalism, reporting on the lives of common people and documenting human rights violations that have occurred over the years. Malini, thank you for making time. This is a difficult time. Mukesh Chandrakar's death, I'm sure, has left everybody in the journalists' fraternity in Chhattisgarh really shocked. It's definitely disturbed everybody across India. Can you tell us if how to look at this particular death of this young reporter in the context of the work that he did, which is that he reported on local issues, became the voice of the people of the Bastar region, and he also helped mainstream national and state level media to report from this very difficult area. So, reporting from Bastar has been difficult, uh, and which all of the journalists who are reporting from Bastar have faced in some way, some kind of a pressure in some way or the other. And locally, people living in the at the district level and reporting becomes all the more difficult because they are closest. They have family members, engaged in different activities. So the pressure on them is extremely high. It is different when people come from Delhi and other places, come report and then leave. Yeah, but local journalists face the brunt far more than journalists from other places. We also know that aware that this is a conflict-ridden state, so there is always the difficulty of reaching those places. Now, Mukesh is a kind of person who has always reached to places of encounter, to places wherever the villagers have said that somebody has been abducted, somebody has been taken in. He has negotiated for the release of even the police Yes, personnel. Yeah, that's yes. very, very popular of him. He's done that twice, not just once. And the villagers and also the Maos trust people like Mukesh Chandrakar to do something which would be not harmful for anybody, and therefore they let them go. They come, they negotiate, and truthfully take back the person. The police have also had trust in him. Now, for someone like Mukesh to have suffered such a gruesome kind of a death is completely shocking. Someone who was so popular, someone who was so good in his work, somebody who was bringing out the truth, somebody who was reaching out those places much before any professional journalist would reach, somebody who has built his life around the difficulties that he has himself faced as a child and then moved on to talk about it to the larger world. That is something very shocking. Why is his voice being silenced is a huge question that people have been asking. Now, Mukesh's, I wouldn't say just the death, but the brutal murder that has happened, that too at the hands of a contractor, makes it a lot more shocking because contractors have a large stake in the development activities in Bastar. And in Bastar, any development activities has to do a lot with construction activities. And roads are a massive network of roads are being constructed, Yeah. crisscrossing all through Roads are villages. almost symbolic of the Indian state progressing deeper and deeper into areas, isn't it? Yes, yes. They feel that if the remote villages are connected to the main roads, to the mainstream through roads, then development takes place. No? That's their intention. And they feel, yes, the Naxal problems very much identified way back in the early 2000 that there is a deficit of development in Bastar is true. But roads are not the only symbol of development. Sure. That is something which our government thinks that roads will bring in development. But Yeah. what roads have also done is thrown open contractors to come into the play. Yeah. Yeah, Yeah. and being a very very difficult or a conflict ridden area where you do hear about vehicles being burned down, contractors being killed.
So there is a lot of protection that is required for the contractors. Now the contractors seek their protection by closely associating with the police personnel, closely associating with the administration because they get the contract. Who gets the contract? Because these are left-wing extremism projects, and because of the difficulties of constructing, the cost like is raised 10 times over the normal roads that are being constructed. So this construction activity was started with the tender was passed in 2015, which was set at the rate of 54 crores, has gone up to 120 crores. And who monitors the quality of the road? How does the department does the evaluation of the road before making the payments out? And there are reports now emerging at more than 50% of the payment has already been doled out. And when we went into the roads, we saw There's nothing. it's such a poor quality, and it is only normal that a journalist who's from Bijapur that would that he would report on such poor quality, and the government should have been actually very happy that somebody is bringing to the notice of this. But the nexus is so strong that a contractor like Suresh Chandrakar feels that he can not only murder, clear away all the evidence, and even bury him in a septic tank so that no evidence is available, and then he can sort of go with his business as usual. And that's primarily because he's got the network of powerful people around him. Yeah, and that is what is now a very very stark revelation that Mukesh's so-called death has shown to Brought all to of us. light. The Yes. police investigation has resulted in arrest. This contractor, Suresh Chandrakar, three other people, including two of his brothers and one employee. And the understanding at this point seems to be that this murder was because of this reportage of the road that Mukesh did. There was also some mention of the from the police that there was some money withdrawal by this contractor. There's a money trail that's being investigated, and there's some loose talk and talk on the ground that perhaps Mukesh and some other journalists from mainstream media that he was working with on this particular road investigation story, that the journalists may have been trying to extract money. How do you react to this, and is the investigation proceeding in a satisfactory manner according to you? Sorry, whether there's truth in that. Now Mukesh is not there to defend himself. Yeah, it's very Yes. easy to plant anything Say. on him, and that is something which we will not accept. It is for the contractor to say, which means that if this is the practice that contractors are up to on all the road construction, then the police should have been up it long back. Why should they wait for the something like this to Yes. happen? Now coming out with the and this needs to be also further investigated, that which departments are involved. Now there are rumors that as soon as a road contractor gets his tender passed, there is a 10 to 20% commission given to the PWD. Yeah, so we can also make such statements and say that this is what would have happened. Now Yes. it's very convenient to say anything, but the fact of the matter is that any road construction activity involves some kind of key stakeholders. I won't deny that. And that involves, there are a lot of journalists, there are contractors, of course, there is police, there is administration, there are departments which are involved in it. All these people are there, including the Maoists. Yeah. Now, allegations are just thrown across everybody. The Maoists are being paid commission and therefore the roads are being constructed. The police is paid commission, therefore they give the protection. The administration gets some cut from the PWD. Now all that needs to come out. Let the police investigate everything. Let the police if they feel that there has been exchange of money, then the entire bit has to come out. It can't just go around saying that Mukesh, they were dealing with the journalists with some kind of settlement. Sorry, that is not acceptable. That Fair is, they are saving their own skins, because we journalists also know a lot of things that the department is also into. Fair enough. Malini, give us a sense of the context in which people live and work in Chhattisgarh's conflict-ridden areas. You've spent how many years? 20 years more? I've been living in Chhattisgarh since 2009, but I shifted to uh, Bastar in Jagdalpur, where I live. That is since 2011, I've been living there. And I've been reporting actively since 2015, uh, especially on the context of conflict in Bastar. Now, if you live a life in Bastar as if nothing is happening, that you're happy with the little shops that you have and not get concerned about it, or what's how rights violations are happening, if there are civil society which do not raise any of these issues, then you are a fine person. But the moment you raise questions about
what the government policies are, or what actually is happening in the name of anti-Naxal operations, then, or if you are a journalist who are just reporting what the police is handing out as press note, then you are a fine journalist. But if you start digging deeper into it, then there is something, you can expect something against you. There could be cases against you, there could be threats against you, and there could be all kinds of things And which. you've experienced that personally. You've Oh been at the yes. receiving end. You were hounded out of Bastar, Yeah. and so it's difficult at every level, isn't it? Oh, yes. In 2016, not just me, there were lawyers who were fighting for Adivasis pro bono. There were activists who were raising their concerns, who were, the Adivasi activist who was thrown an acid on his face. So a lot of incidents have happened. The moment you question anything in the name of anti-Naxal operations, that is something the police is not happy with. Now, the administration have very little role. I must say that the entire Bastar is actually like a police state. The collectors have no role to play. It's the police who does everything. And being a police state, which means that everybody is under surveillance. Uh, Journalists who are reporting on such matters are definitely under surveillance, and therefore reaching to those places and doing the work is extremely difficult. Which is why a lot of time local journalists are they sort of try to balance their work, also put in some news which may not be totally correct from the side of the police. They also respond to when Maoists call them in to go and meet them. So this is how they have been balancing, because they felt that, I mean, nobody has put their gun on their head and say that become a reporter, but they voluntarily became reporter. And they're doing people like Mukesh and a lot of other people who have been working with mainstream media, mainstream regional media, who eventually found that their stories are not finding space in those media. Why do you think that is? See, for instance, you have just published a long reported piece for the Scroll about people, about 8 people, seven, and then the toll went up to 8 people who the police have identified as Maoists, and the villagers say actually that they may not be, or they are not, They're and not. in fact that there were children Yeah. who were caught in this crossfire. And it's only when the fact that the children were caught in the crossfire that the enormity of this came to light. So Right. I want you to put this report in perspective of what you just said, which is that people are in the mainstream are not making space really for reports from deep of conflict ridden Chhattisgarh, and for stories like the one you've just reported. Yeah, for reasons. One is there is a physical logistics difficulty of reaching those places. Secondly, the police doesn't want these reports to come out. Sure. Yeah, Yeah. so many times reporters are asked not to do such reports. Their reports will, as soon as these reports come out, they're immediately reached out and say that locally you cannot even play it on social media. Now people like Mukesh Chandrakar, whatever they have done in their career as mainstream regional journalists, when they began seeing that their pieces are not finding space, they have moved to YouTube journalism. A lot of YouTube journalists are there now in Yeah. Bastar. uh, I mean, it has mushroomed so much that while on the one hand you get a lot of news which are not covered by mainstream media, but there is also a little fear that a lot of news which unverified news also get Sure. pushed in. Sure. So Yeah. there is that danger. But Yeah. people like Mukesh who have done the grind of being a mainstream reporter and also reporting journalism to the core, have found YouTube as a medium to put forth stories, and a lot of them are doing it. And yes, mainstream media is not doing its job as it should be doing. And I think including English mainstream media and Hindi mainstream media should do a lot more, because a lot of things are happening, and especially in the context of Vassar, because now they have set a deadline of 31st March To 2026. 2026, yeah. Yes. Home Minister Amit Shah was, I think, went into deep into a Gundam village, I think, and Yes. actually, Yes. is trying to do outreach to villagers directly. And I Yes. think the state says that it will wipe out the Maoists Yes. by Yes. 31st March Yes. Yeah. 2026. So it's Yeah. going to get more intense. They have set a deadline. Now, if you set a deadline for clearing something, it's like an accounts clearance. Yeah.
And if you have the credit and debit and credit and debit, you're going to have clearance. And how are you going to do it? So you have stories, which the last one that I carried, when the The people, one from Narayanpur. the one from Narayanpur, which actually said that the villagers overheard them saying that, "Kya kare inka? इनको मार दें या छोड़ दें?" And when they heard that they should be shot down, and who are these people who are being shot down? They declare them to be 2 lakh or 1 lakh worthy Maoists who are being, so-called Maoists who are being killed. So if you are putting a deadline, the police is pushing rewards for such, for killing so-called Maoists. So the police is going all out, and if that reward becomes the incentive, and that, of course, the police, whenever I've gone to senior police officers, they have said, they have denied it completely. This is not the case at all. Nobody is going to risk. The policeman is not going to risk his or her own life in order to get a reward. But the fact is that you are killing a lot of civilians as part of your anti-Maoist operation, and that is a truth you cannot ignore. That is the truth. You cannot brush it under the carpet. And there is no say of saying that, okay, we'll look into it. They have this standard magisterial inquiry, which the villagers do not even know, come to know of it. It's given a small advertisement in the newspaper. The sarpanch is given the news to ask the villagers to come and give a statement about whether the villager who was killed, what happened Sure, exactly. sure. So To that is, depose, to depose before the magistrate. Yeah. yeah, but they hardly ever reach. The villages are so they don't even get the information. I mean, they should find ways of doing it, no? Instead of just Yeah. declaring them to be Maoists, doing the rewards. And it's almost like we don't want. It's like we don't want to listen to any rational. For us, the agenda is, show to the home minister the Maoists have been killed. Uh, you don't wipe out if Maoism or Naxalism by killing people. How are you going to do that? This is something which I fail to understand. Give us a sense of how you think the Maoist groups are going to react to this heightened intensity, in quelling their movement. They're outlawed. They also use absolutely brutal methods to get civil society there to comply, local people, the common man to comply. How do you see their activity and their actions in this current scenario, and how do you expect it to play out over the next year? So definitely detrimental to the region, because the more you push an underground group, they're going to find other ways of doing it. And we have had a lot of deaths due to IED, Yes. Yes. improvised explosive Yeah. devices. The recent one is about 7 Bastar fighter who are Adivasis again. I mean, well, let me come to that later. But 7 Adivasi Bastar fighters have died, including a driver who's a civilian. Yes. You know, Yes. and so an Adivasi Bastar fighter is allowed to go in a civilian vehicle. The question remains, why? Why isn't he going in a police vehicle, which is far better vehicle? Yeah, but Adivasi fighters, even in the police force, are they being shortchanged for a much bigger goal? Is a huge question that still needs a response. But the fact is that a lot of IED explosions have happened. A lot of villages have also been injured because of the IED. They are using crude bombs. Uh, I've also done a story about recruitment of underage children in their forces. I've had conversations with them, and though they say that our age factor is 16, anyone below the 16 we do not take, but I've come across instances where children younger than 16 have also been recruited. There is one very young girl who died, a 14-year-old girl who died, which I have also reported about. And so these are the things that you're going to see, a regressive kind of things that are happening within the society, Adivasi community in Bastar, which is actually the Adivasi community is such a peaceful community and has lived a life, completely different from what our mainstream people know about, and not bothering anybody about the little lifestyle that, very with minimal needs they have free. Suddenly they have been pushed into some kind of a game of war, which is a game of greed, I would say, because the government is very keen to building roads in order to To reach to the access it. mining areas. Yeah. Yeah, and here are the Maoists who are talking about protecting the forests and this thing. But what is happening to the people there? People are being killed as being police informers because they want to safeguard their own interest. So a huge, escalation of violences that is taking place, and you're going to leave a very, very battered kind of a society. The social fabric is going to be very badly torn, which will take a long time to recover. It's over 3 decades now. Yeah. It's over 3 decades. You don't allow a society to, decay in this manner.
Right. And this Malini, is second generation which is now growing up in violence. Yeah. yeah. Malini, you mentioned 3 decades that this festering problem, you mentioned that this problem has been festering for 3 decades. And that means that governments at the center and at the state in Chhattisgarh have alternated. So you've had the BJP, you've had the Congress in power. Is there any difference in the way, the political parties have handled Chhattisgarh, or when it comes to Chhattisgarh and Bastar and the conflict with the Maoists, are all political parties actually the same? Sadly, most of them have been same. We have only had only Congress and the BJP. The Yes. BJP in its first 15 years of regime uh, did very little for the Adivasi community. Uh, so when Congress was brought in fact, including all the Adivasi belt where it won all the seats, they did very little. And now the BJP has come again to power. Yes. The Yes. only difference we feel is that during the Congress rule, there were more arrests and there were actually not so much of killing. But now in the BJP, even before they announced the chief minister, Vishnu Desai's name as the chief minister of Chhattisgarh, the operation began. It was enough for the party to be there, and the home minister came and announced, "Ab hum aa gaye hain, double engine sarkar, and we're going to wipe out the Naxalites." And police just got into action, and then the whole killing spree, so to say, began. Uh, while the Congress said that we will find ways of releasing all those Adivasis, innocent Adivasis who have been put in behind bars during the BJP regime, and Yeah. will take them out of the prison, nothing happened. Yeah, they put up a committee, etc. They also put up a committee for protection of journalists because that was the time, BJP's time, when a lot of us, including many other journalists, had faced challenges to journalism. But kind of a bill has come out, which a lot of us were critical about also, but nothing has moved in the sense of an act. And now the BJP has completely put it away, and the killings have started. And this is like a Salva Jurum of a second nature. Now, during Salva Jurum, we know that it was, they recruited civilians as special police officers, gave them the guns, and asked them to go on Yeah. do what they want to do. Now, here we have people who are actually part of the police. So the CRPF trains the Bastar fighters. The Chhattisgarh police trains what they call the DRG, the District Reserve Guards, who are actually surrendered Maoists who have come into the police force, and they're using their very skills, to counter them. And the CRPF and the other forces, which is coming in such huge number, we have every 5 to 3 kilometers security camps. So Yeah. our calculation is that in Bastar, some of the interior areas, there is one security force personnel for every 9 civilian. That is the extent to which militarization has happened. Yeah? And then you have an Adivasi front force in the front, which is fighting its own Adivasi community on the other side, who are part of the outlawed Maoist community. And yeah, I mean, I go to villages where Maoists have been killed. You see a young woman with a little baby and say that my husband was not a Maoist, but he's been killed. Or you see a wife who's saying, yes, he was a Maoist. He had gone for a meeting and now he's killed and I have a little baby. And you also go to the police force's house where the Bastar fighters have lost their husbands and were sitting with a little baby and say that my husband has been killed by the Maoists. Yeah. So it's the same community which is finding so difficult to adjust to the violent kind of a society that we are now creating. So it's a very complex thing that the government, instead of bringing a solution to it, is only making it very, very difficult for people to deal with. Yeah. Malini, I mean, this is so complex. Thank you for explaining a little bit of what, uh, journalists like you do, what you are recording and documenting for the rest of us, and what Mukesh was doing and who we've lost in this horribly brutal manner. We'll keep talking, Malini. Is there a final word that you want to close with? What you want to leave viewers with? I'm sitting in Mumbai, very far from the realities that you're describing. What would you want to leave people sitting in far flung Delhi, Mumbai, other metros, Bangalore, Chennai, Hyderabad? How would you want us to
use this terrible occasion of a young journalist's death and the spotlight it throws on journalism as well as on Chhattisgarh. Yeah. So Mukesh's brutal death only says that the truth needs to be out there. There'll be many more Mukeshes who will be chasing the truth, and the government's job is to not stop journalists from going into those areas and allow them to do the truthful work. Journalists should, instead of feeling sad and scared about what has happened to someone like Mukesh, should only feel emboldened to continue the work, and that emboldenment will come from the government's action, and that is what everybody is waiting for. And we do hope the government has the guts to pull out the truth uh, of the entirety of that, what happened in that entire case of Mukesh Chandrakar. I really hope they have the guts to show that out. Yeah. Malini, like I said, thank you for the work you do. Thank you for making time to talk to us. We'll keep talking. We'll keep tabs on the work that you do, and we would like to talk about it more frequently. Thank you. So Thank you thank so you and much. good Thank you luck. so much for putting me Yes. on. Thank you very much for watching this episode of Keep Talking. I hope these three separate conversations with Nitin Sethi, Pushpa Rokade, and Malini Subramaniam have given you a perspective on what journalism means, why it matters to you and me, and also what's going on in Chhattisgarh today. Thank you very much for watching.